Welcome to Revise and Resubmit, Weekend Classics. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Today, we're plunging into something truly foundational. It's a piece of academic research that wasn't just describing a system. It really was the blueprint for Google. That's right. We're diving into the paper titled The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine. It came out in the Computer Network's journal back in 1998. And this wasn't just, any paper from 98. This really is arguably the academic paper that started Google. Written by two PhD students at Stanford, right? Yeah. Larry Page and Sergey Brin. Yep. They met at Stanford, I think it was 95, and they started collaborating on this research project. They actually called it Backrub initially. Backrub. I love that. What a name. Yeah. And their goal, it sounds almost simple now, but it was about ranking web pages, right? Figuring out importance by looking at the links, pointing to them, using those backlinks. Exactly that. Could you measure importance by looking at who links to whom? And, maybe without realizing just how huge it would become, they developed the algorithm that was the core of the original Google search, PageRank. And they moved fast. By early 98, their system was already indexing something like 24 million pages. Around that, yeah. Which was a lot back then. And even though the homepage still said beta, people were noticing. I think there was an article in Salon.com. Right, Salon.com reviewed it and basically said the results were way better than what you got from the big players at the time, like Hotbot or Excite or Yahoo. Which were the dominant search engines then. Yeah, exactly. So this paper, published in April 98, laid out the technical details of how they built it. It's such a great example of how really deep, rigorous academic work can lead to something incredibly practical. It really is. And, it kind of touches on that idea that wisdom, empathy, human understanding, those aren't things you just optimize in an algorithm. They're lived experiences. And this paper, it shows how Page and Brin lived through this intense research process, this deep technical work, and created something with massive real-world impact. Absolutely. And for you listening, especially if you're maybe new to academic research or thinking about starting your own project, this paper is just a fantastic case study. Definitely. Identifying a problem, proposing something new, building it, documenting it. So our mission today is to kind of unpack this original paper, understand the key ideas, what Page and Brin presented, and really appreciate why it mattered so much, both then and now. What did they build and why was it so different? Right. And we should say we're working mainly from the paper's summary and structure, but the original article itself, it's really well written, published in a top Elsevier journal. Oh, absolutely. I really, really encourage you, whether you subscribe to this channel or not, find the time to read the original. Seriously, the link's in the show notes. It's worth it. You get so much more nuance and detail about the technical challenges and their solutions. It really shows the depth of their work. Okay, so let's dive in. Section 1, setting the scene. What was the actual problem they were trying to solve back in, say, 1998? Well, you have to remember the mid to late 90s, the web was just exploding, doubling in size every few months, maybe. Just chaotic growth. Total chaos. A vast, completely uncontrolled, heterogeneous mess of documents. Imagine like a library where millions of books appear overnight, written by anyone about anything with no card catalog. And the search engines back then, they just couldn't really handle it. Not effectively. Most of them relied heavily on simple keyword matching. Does the word you searched for appear on the page? Okay, it's a match. Which sounds okay. But the paper points out it led to too many low-quality matches because, even then, people were trying to game the system. Keyword stuffing, trying to trick the engines. The paper mentions advertisers trying to mislead users. Exactly. So you'd search for something pretty simple, and you'd just get pages and pages of irrelevant junk or stuff that was deliberately trying to pull you in. And then there were the directories, like Yahoo. Right. The human-curated lists. They were useful for browsing topics, sure, but they were subjective, they cost a lot to maintain, they were slow to update. And they just couldn't keep up with the scale. No way! Not with how fast the web was growing. They were always behind. So quality was an issue. What about the technical side? Just building something that could index all that. Huge technical hurdles. They were already seeing tens of millions of pages, anticipating hundreds of millions, maybe billions soon, and dealing with tens of millions of search queries every single day. That needed a completely different approach to scaling. Like, how do you crawl that fast? How do you store it all? How do you find anything quickly? Exactly. Fast crawling, efficient storage, quick query handling. These were massive engineering challenges that existing systems just weren't designed for.
And the paper notes something interesting about who was doing this work. Yeah, they point out that search engine development had mostly shifted out of academia and into commercial companies. Making it kind of a black art. That's the phrase they use. Proprietary, secret, not shared, and very advertising-oriented. Right. So a really key goal for Page and Brin with this project, with this paper, was explicit. Push search development and understanding back into the academic world. Show that university research could build something powerful, maybe even better. And create a platform, a tool for other researchers to actually study the web, which was hard to do otherwise. Okay, so that sets the stage. Let's unpack the really core innovations. This is where it gets, as you said, really interesting. Right. The big one, the headline act, is PageRank. Okay. The paper calls it an objective measure of a page's citation importance. And the genius insight was using the web's own structure, the links between pages. Which sounds obvious now, maybe, but wasn't the standard. Surprisingly, no. Most competitors were largely ignoring the link structure for ranking purposes. They were focused on the content on the page. It's like they borrowed the idea from academia itself, right? Citation analysis. Exactly. A research paper is considered important if other important papers cite it. They basically said, let's apply that to the web where a link is a citation. Okay, so how does it work? I've heard about the random surfer. Yeah, that's the common analogy to build intuition. Imagine someone just clicking links randomly as they browse. They follow a link, land on a new page, click another link. Just clicking around. Right. But every so often, instead of clicking a link on the current page, they get bored, or maybe just jump to a completely random page somewhere else in the entire web. Okay. That jump represents the damping factor, usually set around 0.85. It's the probability the surfer keeps following links versus making that random leap. So the page's PageRank is what, the chance that this random surfer ends up on that page? Pretty much, yeah. It's the probability that if this surfer clicks around for long enough, they'll land on that specific page. And intuitively, you're more likely to land on a page with lots of other pages linked to it. Yes, but here's the crucial recursive part. Sure. You're even more likely to land there if pages that already have a high PageRank link to it. Ah, so it's not just the number of links, but the quality of those links. Precisely. Importance flows through links. A page with just one link from a very important site, say the New York Times homepage, could have a higher PageRank than a page with hundreds of links from obscure, unimportant blogs. That's a game changer compared to just counting keywords. Or even just counting the raw number of incoming links. Totally different. And the other really big innovation they talk about is how they used anchor text. Anchor text. That's the clickable text in a hyperlink. Exactly. The blue underlined words, usually. Now, traditional search engines, if they used it at all, typically associated that text with the page the link was on, the source page. Okay. Page and Brin flipped it. They associated the anchor text with the page the link pointed to, the destination page. Why is that better? Well, think about it. Often, the anchor text someone uses to link to a page is a better, more concise description of that destination page than the page might provide itself. Give me an example. Okay, say lots of people link to Stanford's main page using the anchor text Stanford University. Right. The actual Stanford homepage might not even have the phrase Stanford University right at the top or use it very often, but Google, by collecting all those incoming links, learns that Stanford University is a very strong description of stanford.edu. Got it. It's like getting descriptions from the rest of the web about what a page is about. Exactly. And it's robust even if the target page changes its content. Plus, the paper points out, this let them effectively index things that weren't even text. Like images or databases. Yeah, or programs, or even email addresses mentioned in links. If someone linked to an image file with the text picture of a cat, Google could index that image under picture of a cat, even though the image file itself contains no text. Wow. And the scale of that. They indexed 24 million pages, but how many anchors? Get this. Over 259 million anchors. That huge difference shows just how much extra descriptive information they were pulling from the link structure itself. And they mentioned an example, Well, Bill Clinton. Right. They said a search for Bill Clinton on their system returned good results from whitehouse.gov and even email addresses associated with him that were found only in anchor text pointing to relevant pages. Which other search engines just looking at page content would likely miss? Often, yeah. So PageRank for quality,
anchor text for description. Those were the killer conceptual innovations. But then they had to actually build it. Which, for 1998, must have been a monumental task. Yeah. How did they structure the system? The paper calls it the anatomy. Right. Section 4 walks through the main components. It's like a factory pipeline. Starts with crawling. Yep. Distributed crawlers that go out and fetch web pages, they design these to be fast, managing potentially hundreds of thousands of simultaneous connections to web servers. Okay, they grab the pages. Then what? The pages go to a URL server, which manages the list of URLs found and to be fetched, and a store server. The store server keeps the actual page content compressed in a big repository. They use something called big files for that. Yeah, a custom file system abstraction they built. It let them handle huge files that spanned across multiple physical file systems on different machines, and it supported compression on the fly. Crucial for managing, terabytes of data even back then. Makes sense. Yeah. Okay, pages are stored. Next. The indexer. This is a major piece. It reads the pages from the repository, parses the HTML, and figures out every word occurrence. They called these hits. And a hit wasn't just the word itself. No, it was richer. It included the word, its position on the page, and importantly, things like the font size and capitalization. Font size, why does that matter? Well, if a word is in a huge font, like an H1 tag, it's probably a heading, right? Likely more important than the same word buried in tiny print in a footer. Ah, clever. Capturing structural clues about importance. Exactly. So the indexer generates all these hits. It distributes them into intermediate files called barrels. Think of these as parts of the index initially sorted by which document they came from. This is sometimes called the forward index. Okay. The indexer also parses out all the hyperlinks on each page and creates a separate anchors file. Got it. So one stream for words, one for links. Pretty much. Then the URL resolver takes that anchors file. Its job is to process the links. It converts relative URLs, like about.html, into absolute ones, like http://www.example.com about.html. And matches them up with the documents they already crawled. Right, assigns them internal document IDs. And here's the key step for anchor text. It takes the text from the link and adds it to the index information associated with the destination document ID. Okay, connecting the description to the page being described. Precisely. The URL resolver also builds the link graph database needed to actually compute PageRank later. Makes sense. What's after the URL resolver? The sorter, remember those barrels from the indexer? Sorted by document ID? Yeah. The sorter takes all those barrels and resorts everything by word ID. This is a massive sorting job, but it's absolutely critical. Why sort by word? Because that's how you build the inverted index. The inverted index. That sounds important. Is that like the index in the back of a textbook? Exactly like that. Perfect analogy. In a book index, you look up a topic, say PageRank, and it tells you all the page numbers where it's mentioned. Okay. An inverted index for search does the same thing. You look up a word, or its ID, and it quickly tells you a list of all the documents that contain that word, and maybe where in the document, thanks to those hit details like position. To build that lookup efficiently, you need the data sorted by word first. Got it. That's the core structure for actually answering searches quickly. Absolutely. Then there's a smaller step, dump lexicon, which just creates the final dictionary of all the words the system knows about. And finally, The searcher. This is the component that runs on the web servers. It uses the lexicon, the big inverted index, and the pre-calculated PageRank scores to take a user's query, find matching documents, rank them, and send back the results page. wow, that's quite a pipeline. It is. And what really stands out when you read that section, and this is huge for anyone building big systems, is their relentless focus on efficiency and scale. How so? Their data structures were carefully designed, big files we mentioned. The way they stored the hits, they used a very compact encoding, just 2 bytes per hit to save space. The structure of the inverted index, the hit lists, everything was optimized for the scale they were anticipating. And they were worried about disk speed, right? Hugely. The paper explicitly calls out disk seeks as a major bottleneck. Disk I/O was orders of magnitude slower than CPU operations back then. Still is, relatively speaking. So what did they do about it? They designed the whole data flow, especially the indexing and sorting stages, to avoid random disk seeks as much as humanly possible. They process data in large sequential chunks. Read a big block, process it, write a big block. That's way, way faster than jumping all over the disk to read tiny bits of data here and there. A classic optimization, but applying it at that scale. That insight was critical. It's
a fundamental principle for large-scale data processing that's still incredibly relevant today. Okay, so they built this impressive system. Let's talk numbers. What kind of scale were they actually operating at in 98, according to the paper? Well, the main index they described was built from crawling and indexing about 24 million web pages. 24 million. And how much storage did that take? Table 1 in the paper breaks it down. The index itself, without the actual compressed web pages, took about 55.2 gigabytes. Wow. Add in the repository of stored pages, and the total footprint was around 108.7 gigabytes. For 1998, that's a lot of disk space. A massive amount. Managing that much data efficiently was a huge part of the challenge. And how fast could they process it? Crawling, indexing. They give some figures. The initial crawl for those 24 million pages took about 9 days overall. But they mentioned that towards the end, once they'd optimized things, they crawled the last 11 million pages in just 63 hours. Which works out to? Around 48.5 pages per second, on average, during that final stretch. Okay. And indexing. The indexer component could chew through pages at about 54 pages per second. And the sorting, that big inverted index step. That was a bottleneck, but they parallelized it. Using 4 machines working together, they could sort the data for the 24 million page index in about 24 hours. A full day of sorting. Okay, so they could build the index relatively quickly, all things considered. Okay. What about actually using it? How fast were the searches for a user? Table 2 gives some sample query times. They're careful to note in the paper that raw query speed wasn't the top priority yet. Building the index and getting the quality right came first. Right. But the sample queries they show were taking somewhere between 1 and 10 seconds to return results. 1 to 10 seconds. Which sounds slow now, but for searching 24 million pages then. It was pretty remarkable. They attributed a lot of that time to disk I/O needed to fetch the index data, especially since it was spread across different machines. They knew they needed things like caching and other optimizations, which they planned as future work. Still, getting relevant results back in seconds was a huge step forward. Absolutely. But it wasn't just about building a better search engine for the public, was it? The paper talks about broader goals. Very much so. A really strong theme is their desire for this to be an academic research tool. How so? By capturing and storing this huge snapshot of the web, the pages, the links they were creating an environment, they called it a space lab-like environment. Space lab, like the space shuttle module. Yeah. The analogy was they were providing this unique facility, this data set, that would let other researchers and students do completely new kinds of experiments and analysis on the web's structure and content. Stuff that was impossible before because nobody had that data collected in one place. Exactly. Accessing and processing the web at scale was incredibly hard for most academics. They wanted to lower that barrier. So a platform for studying the web, not just searching it. Precisely. And they also specifically mentioned their belief that really interesting research would come from analyzing user search data, query logs, click patterns, that sort of thing. Which commercial companies had, but guarded closely. Right. They hoped making the system itself more open, or at least the data snapshot, would enable that kind of research in academia too. And they clearly weren't finished. The paper lists future work, right? Oh, yeah. Their immediate plans were scaling up, aiming for 100 million pages next. Big efficiency improvements were high on the list. Query caching, maybe building smaller sub-indices for faster lookups, smarter ways to handle updates. Like figuring out which pages change often and need recrawling. Exactly. And beyond core performance, they were already thinking about exploring more advanced features, like using relevance feedback from users, automatically clustering search results, or even using user context to personalize results. Lots of ideas. So let's pull it all together. Why does this specific paper, written by these 2 Stanford students back in '98, still resonates so much today? Why is it so important? Well, first and foremost, it just fundamentally shifted how search worked. That combination of PageRank, getting an objective quality signal from links, combined with the descriptive power of anchor text, and other factors like word proximity, it just produced vastly better, more relevant results than the competition. We keep coming back to that Bill Clinton example. Because it illustrates it so well. Google could find the official White House pages, specific relevant contacts, things competitors just missed because they were stuck looking only at keywords on the page itself. Quality went way up. And it wasn't just a theoretical idea. They built it and showed it worked. Exactly. It was a powerful demonstration that rigorous academic research could create something practical that blew away the existing commercial systems in a really tough competitive space. And obviously it laid the foundation for, Right. well, for modern search. The algorithms today are orders of magnitude more complex, of course.
Machine learning, AI, personalization. It's a different world. But the core ideas, understanding link structure, understanding anchor text and surrounding text, evaluating the authority or importance of a page, those fundamental principles pioneered in this paper are still absolutely central. It's kind of the bedrock. It really is. And beyond just search, the paper itself is a masterclass in designing large-scale distributed systems. That's so. The way they approach the problems of scale, efficiency, data management, fault tolerance, those insights about avoiding disk seeks, using compact data structures, parallelizing tasks, those became patterns used in countless other massive computing projects well beyond web search. It's just a great piece of systems engineering documentation. So wrapping up, we've taken this deep dive into the anatomy of a large-scale hypertextual web search engine. We've looked at the crazy, chaotic web of 1998, the brilliant core ideas of PageRank and anchor text, the impressive system architecture they designed and built to actually implement those ideas at scale, the sheer numbers involved. Even back then, it's just such a fascinating snapshot of a key moment. a truly pivotal moment for the internet and for the impact of academic research. And I really hope, especially if you're out there starting your own research, that this serves as inspiration. Yeah, it's a model. Right. Identify a real problem, come up with genuinely novel solutions based on solid principles, actually build the thing to prove it works, and then share it clearly with the community. It just shows the power of that focused, rigorous approach. It really does. And one last time, we really encourage you to read the original paper. We've only scratched the surface. The summary we used is good, but the detail in the full paper about the components, the data structures, the challenges they faced, it's incredibly illuminating. Link is in the show notes. Definitely read it. And maybe, as a final thought to leave you with, consider this. The paper states Google's goal back then was to push more development and understanding into the academic realm, to be a research tool, that space lab-like environment. Now, fast forward 20 plus years. Google is one of the biggest, most influential, most profitable companies on the planet. How do you think that initial academic vision, that focus on openness and research enablement, has ultimately balanced out against the commercial realities and pressures of running a global tech giant in the search world? That's a really interesting question to ponder. How did that balance shift over time? Something to think about. A very provocative thought indeed. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটের উইকেন্ড ক্লাসিক্স পর্বে আপনাদের স্বাগত। আমি পাভলভ। আর আমি নিকিতা। আজ আমরা একটা দারুণ পেপার নিয়ে আলোচনা করব, মানে যে একাডেমিক পেপারটা থেকে গুগলের জন্ম হয়েছিল সেটা নিয়ে। হ্যাঁ, পেপারটার নাম ছিল দি অ্যানাটমি অফ আ লার্জ স্কেল হাইপারটেক্সচুয়াল ওয়েব সার্চ ইঞ্জিন। এটা কম্পিউটার নেটওয়ার্কস অ্যান্ড ISDN সিস্টেমস জার্নালে বেরিয়েছিল। ভাবুন একবার, সেই 1990-এর দশকের মাঝামাঝি সময়কার ইন্টারনেট, কত তথ্য, কিন্তু দরকারি জিনিস খুঁজে পাওয়াটা কি যে কঠিন ছিল। ঠিক, তখন ইয়াহুর মতো ডিরেক্টরি ছিল বটে, কিন্তু ওয়েব এত দ্রুত বাড়ছিল যে ওদের পক্ষে তাল মেলানো মুশকিল হয়ে যাচ্ছিল। আর ঠিক সেই সময়ে 1995 সাল নাগাদ স্ট্যানফোর্ডের দুজন PhD স্টুডেন্ট ল্যারি পেজ আর সার্গেই ব্রিন একটা প্রজেক্ট শুরু করেন। হ্যাঁ, প্রজেক্টটার একটা মজার নামও ছিল ব্যাকরাব। ওদের আসল লক্ষ্যটা ছিল ওয়েব পেজের ব্যাকলিঙ্ক ডেটা, কোন পেজ থেকে কোথায় লিঙ্ক যাচ্ছে সেটা বিশ্লেষণ করা। আর সেটার ভিত্তিতেই পেজগুলোর একটা র্যাঙ্কিং বা গুরুত্ব ঠিক করা, তাই তো? একদম। আর এই আইডিয়া থেকেই তো তৈরি হলো পেজ র্যাঙ্ক অ্যালগোরিদম। এটাই কিন্তু গুগলের সার্চের একেবারে মূল ভিত্তি ছিল। আর ব্যাপারটা খুব তাড়াতাড়ি এগিয়েছিল মনে হচ্ছে। 1998 সালের শুরুতেই তো ওরা প্রায় 24 মিলিয়ন পেজ ইন্ডেক্স করে ফেলেছিল। হ্যাঁ, ইন্ডেক্স করা হলো সার্চ করলে যাতে চট করে খুঁজে পাওয়া যায় তার জন্য সব ডেটা গুছিয়ে রাখা। আর ওদের সিস্টেমটা এতটাই ভালো কাজ করছিল যে salon.com এর মতো জায়গায় লেখাও বেরিয়েছিল, তাই না? বলছিল যে হটবট বা ইয়াহুর চেয়েও নাকি গুগলের রেজাল্ট ভালো ছিল। ঠিক, আর সেটা কিন্তু গুগল যখনও পুরোদস্ত লঞ্চ হয়নি, বিটা স্টেজেই ছিল।
তারপর 1998-এর এপ্রিলে ওরা ফাইনালি পেপারটা পাবলিশ করে। আজকের আলোচনাটা তাহলে এই পেপারটাকে ঘিরেই, বিশেষ করে যারা সবে একাডেমিক রিসার্চ শুরু করছেন বা করবেন ভাবছেন, তাদের জন্য এটা খুব ইন্টারেস্টিং হবে আশা করি। অবশ্যই। তবে তার আগে একটা কথা বলি, এই পেপারটা পড়লে বোঝা যায় জ্ঞান বা মানুষের বোধবুদ্ধি এগুলো শুধু অপটিমাইজ করার জিনিস নয়, এগুলো আসলে যাপনের অংশ। আমরা শো নোটসের লিঙ্কটা দিয়েছি, সময় পেলে অবশ্যই পড়বেন। আচ্ছা, এবার তাহলে পেপারটার গভীরে যাই। সেই সময় ওয়েব সার্চের আসল চ্যালেঞ্জগুলো কি ছিল? আসলে দুটো বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। একটা হলো স্কেল, মানে তথ্যের বিপুল পরিমাণ। ওয়েব তখন হু হু করে বাড়ছে, লক্ষ লক্ষ পেজ। এত ডেটা সামলানোই একটা বিরাট ব্যাপার ছিল। আর দ্বিতীয়টা হলো কোয়ালিটি, মানে তথ্যের গুণগত মান। তখনকার সার্চ ইঞ্জিনগুলো মূলত কিওয়ার্ড মেলাতো, মানে আপনি যা লিখে সার্চ করছেন সেই শব্দগুলো কোন পেজে আছে দেখত। তাতে সমস্যা কি হতো? সমস্যা হলো প্রায়শই খুব অপ্রাসঙ্গিক বা লো কোয়ালিটির রেজাল্ট আসতো। ধরুন আপনি একটা ভালো রেসিপি খুঁজছেন, কিন্তু সার্চ রেজাল্টে এমন সব পেজ আসছে যাতে শুধু শব্দটা আছে, কাজের কিছু নেই। হ্যাঁ, বুঝেছি। আর মানুষ দিয়ে চালানো যে ডিরেক্টরিগুলো ছিল, যেমন ইয়াহু, সেগুলোর কি অবস্থা ছিল? ওগুলো ভালো ছিল, কিন্তু খুব স্লো, মানে নতুন সাইট যোগ হতে অনেক সময় লাগতো। ওয়েব যে গতিতে বাড়ছিল সেটার সাথে পাল্লা দেওয়া সম্ভব ছিল না। এখানেই তাহলে পেজ আর ব্রিন একদম অন্যরকম ভাবলেন। ওরা শুধু কিওয়ার্ড না দেখে লিঙ্কগুলোর দিকে মন দিলেন। ঠিক তাই। ওরা ভাবলেন ওয়েবের এই যে লিঙ্ক স্ট্রাকচার, একটা পেজ থেকে আরেকটা পেজে যাওয়া, এটা আসলে এক ধরনের সিগন্যাল। মানে একটা পেজ যখন অন্য পেজকে লিঙ্ক করে তখন সেটার গুরুত্ব বাড়ে। ও আচ্ছা, অনেকটা যেন ভোটের মতো। একদম, অনেকটা সেরকমই। এই আইডিয়া থেকেই পেজ র্যাঙ্ক এলো। শুধু কতগুলো লিঙ্ক আসছে তা নয়, কোথা থেকে লিঙ্ক আসছে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। মানে একটা গুরুত্বপূর্ণ পেজ থেকে লিঙ্ক এলে সেটার ভ্যালু বেশি। দারুণ বুদ্ধি তো। তার মানে শুধু পেজের ভেতরের কন্টেন্ট নয়, বাইরের লিঙ্কগুলো পেজের গুরুত্ব ঠিক করছে। কিন্তু পেজ র্যাঙ্ক ছাড়াও তো অ্যাঙ্কার টেক্সটের কথা বলছিলেন। হ্যাঁ, অ্যাঙ্কার টেক্সটও খুব জরুরি ছিল। অ্যাঙ্কার টেক্সট হলো যে শব্দগুলো ব্যবহার করে লিঙ্কটা তৈরি করা হয়েছে, মানে লিঙ্কের ওপর যে লেখাটা থাকে। আচ্ছা, যেমন এখানে ক্লিক করুন, বা ধরুন অমুক ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইট। হ্যাঁ, ওরা বুঝলো যে এই অ্যাঙ্কার টেক্সটটা আসলে যে পেজটাকে লিঙ্ক করা হচ্ছে তার একটা ভালো বর্ণনা দেয়। যেমন অনেকে যদি বিল ক্লিন্টন লিখে হোয়াইট হাউসের ওয়েবসাইটে লিঙ্ক করে, তাহলে গুগল বুঝবে ওই পেজটা বিল ক্লিন্টন সম্পর্কিত। তার মানে কিওয়ার্ড ম্যাচিংয়ের থেকেও ভালো ফল পাওয়া সম্ভব। অবশ্যই, এটা রেজাল্টের কোয়ালিটি অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। এমনকি যেসব পেজের টেক্সট কম, যেমন ধরুন ছবি বা প্রোগ্রাম ফাইল, সেগুলো খুঁজে পেতেও সাহায্য করত। তাহলে পেজ র্যাঙ্ক দিয়ে গুরুত্ব বোঝা গেল, আর অ্যাঙ্কার টেক্সট দিয়ে বিষয়বস্তু, দুটো মিলিয়ে দারুণ কম্বিনেশন। কিন্তু এত ডেটা, মানে ওই 24 মিলিয়ন পেজ, সেগুলো সামলানোর জন্য সিস্টেমটা কেমন বানিয়েছিল ওরা? নিশ্চয়ই খুব এফিশিয়েন্ট হতে হয়েছিল। হ্যাঁ, সেটা তো বটেই। ওদের পেপারটায় সিস্টেম আর্কিটেকচারের কথাও বেশ ডিটেলে বলা আছে। ওরা একটা ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেম বানিয়েছিল, মানে অনেকগুলো সাধারণ কম্পিউটার একসাথে জুড়ে কাজ করত। মানে কোনো একটা সুপার কম্পিউটার নয়? না, সেটাই তো মজা। ওরা তুলনামূলক কম দামি অনেকগুলো পিসি ব্যবহার করেছিল। ডেটা ক্রল করা, স্টোর করা, ইন্ডেক্স করা, র্যাঙ্ক করা, সার্চের উত্তর দেওয়া, এই সব কাজ ভাগ করা ছিল বিভিন্ন মেশিনের মধ্যে। আর ডেটা স্টোর করার ক্ষেত্রেও কি নতুন কিছু ভেবেছিল? হ্যাঁ, ওরা ডেটা কম্প্রেস করে রাখত ডিস্ক স্পেস বাঁচানোর জন্য। আর ডেটা অ্যাক্সেস যাতে দ্রুত হয় সেদিকেও নজর ছিল। মানে ডিস্ক থেকে ডেটা পড়া তো স্লো, তাই যতটা সম্ভব র্যামে রেখে কাজ করার চেষ্টা করত। পেপারটাতে ওরা একটা উদাহরণও দিয়েছিল না, বিল ক্লিন্টন সার্চের? হ্যাঁ, দিয়েছিল। দেখিয়েছিল যে ওদের সিস্টেমে সার্চ করলে কেন হোয়াইট হাউসের প্রাসঙ্গিক পেজগুলো আসছে, যেখানে অন্য ইঞ্জিনগুলো হয়তো অন্য কিছু দেখাচ্ছে। এটা ওদের অ্যাপ্রোচের কার্যকারিতা প্রমাণ করেছিল। কিন্তু ওদের লক্ষ্য কি শুধু একটা ভালো সার্চ ইঞ্জিন বানানোই ছিল, নাকি আরও কিছু? আসলে ওদের একটা বড় উদ্দেশ্য ছিল গুগলকে একটা রিসার্চ টুল হিসাবেও গড়ে তোলা। রিসার্চ টুল মানে যাতে অন্য গবেষকরাও ওয়েবের মতো বিশাল ডেটা সেট নিয়ে গবেষণা করতে পারে। তখন তো সার্চ ইঞ্জিন টেকনোলজিগুলো বেশিরভাগই ছিল প্রাইভেট কোম্পানির হাতে। ওরা নিজেদের টেকনিক গোপন রাখত। ওহ আচ্ছা, মানে ওরা জ্ঞানটাকে একাডেমিক কমিউনিটির জন্য খুলে দিতে চেয়েছিল। একদম। ওরা চেয়েছিল ওদের কাজ দেখে অন্যরা উৎসাহিত হোক
আরও ভালো সার্চ বা ডেটা অ্যানালিসিস টেকনোলজি তৈরি করুক। সত্যি অসাধারণ একটা পেপার। শুধু একটা কোম্পানির শুরু নয়, এটা ইনফরমেশন রিট্রিভাল ফিল্ডটাকেই অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিল। যারা নতুন গবেষণা শুরু করছেন তাদের জন্য এটা মাস্ট রিড আমি বলবো। ঠিক। আর শেষে একটা প্রশ্ন রেখে যাই সবার জন্য। পেপারটার মূল লক্ষ্য ছিল একাডেমিক রিসার্চকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আজ গুগল এত বড় একটা বাণিজ্যিক শক্তি, তথ্যের উপর এত নিয়ন্ত্রণ, সেই নিরিখে দেখলে ওদের সেই প্রথম দিনের একাডেমিক লক্ষ্যটা ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছে এটা নিয়ে ভাবা যেতে পারে। नमस्कार और रिवाइज एंड रीसबमिट की वीकेंड क्लासिक्स एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलो और मैं हूं निकिता। आज हम एक बहुत ही खास एकेडमिक शोध पत्र की गहराई में उतर रहे हैं। एक ऐसा पेपर जिसने सच में दुनिया बदल दी। ये वो लेख है जिसने गूगल की नींव रखी और ये छपा था प्रतिष्ठित कंप्यूटर नेटवर्क्स जर्नल में। तो कहानी शुरू होती है 1995 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। वहाँ 2 PhD छात्र थे, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। वो मिले और उन्होंने एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे साथ काम करना शुरू किया, नाम बैकरब। उनका मकसद था कि वेब पेजेस को उनके बैकलिंक्स के आधार पर रैंक किया जाए। मतलब कौन सा पेज ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हें उस वक्त बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, लेकिन वो असल में पेज रैंक एल्गोरिदम बना रहे थे। हाँ, वही एल्गोरिदम जो गूगल सर्च का बिल्कुल कोर, उसका आधार बना। फिर अप्रैल 1988 में उन्होंने अपना ये काम पब्लिश किया। पेपर का टाइटल था द एनाटॉमी ऑफ अ लार्ज स्केल हाइपरटेक्सचुअल वेब सर्च इंजन। और ये चर्चा उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे ज़रूरी है जो एकेडमिक शोध की दुनिया में अभी नए हैं, अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि इस पेपर में था क्या। देखिए, उस समय वेब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और जो मौजूदा सर्च इंजन थे वो अक्सर बहुत सारे मतलब बेकार के रिजल्ट्स दिखाते थे। सोचिए ज़रा, 1997-98 की बात है। करोड़ों वेब पेज, अरबों शब्द, रोज़ लाखों लोग कुछ ढूंढ रहे हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती थी। बिल्कुल। और यहीं पर पेज और ब्रिन का नज़रिया एकदम अलग था। उन्होंने ये देखा कि वेब का जो अपना ढांचा है, जो हाइपरलिंक्स हैं, जो पेजों को जोड़ते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके बेहतर परिणाम दिए जा सकते हैं। इसकी प्रेरणा उन्हें मिली अकादमिक दुनिया से। जैसे रिसर्च पेपर्स में होता है ना, किसी पेपर का महत्व इस बात से पता चलता है कि कितने दूसरे पेपर्स उसे साइट कर रहे हैं, उसका हवाला दे रहे हैं। अच्छा, तो जैसे एकेडमिक साइटेशंस होते हैं, हाँ। वैसे ही वेब पर लिंक्स को देखा उन्होंने, एक तरह का वोट। हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। इसी सोच से निकला पेज रैंक। ये हर वेब पेज को एक महत्व का स्कोर देता है। और ये स्कोर सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि कितने पेज उससे लिंक कर रहे हैं, बल्कि इस पर भी कि जो पेज लिंक कर रहे हैं उनका खुद का पेज रैंक कितना है। तो ये एक तरह की वोटिंग थी, जहां ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा भरोसेमंद पेजों के वोट यानी लिंक का वजन ज्यादा था। ये तो काफी स्मार्ट तरीका था सिर्फ लिंक्स गिनने से। और बात सिर्फ पेज रैंक की नहीं थी, है ना। उन्होंने एक और चीज का बड़ा चातुराई से इस्तेमाल किया, एंकर टेक्स्ट। मतलब वो शब्द जो लिंक में नीले रंग के दिखते हैं, जिन पर हम क्लिक करते हैं। सही कहा, बिल्कुल। गूगल ने इस एंकर टेक्स्ट को इस्तेमाल किया उस पेज के बारे में बताने के लिए जिस पर लिंक जा रहा था, न कि सिर्फ उस पेज के बारे में जहां से लिंक आ रहा था। ये बहुत बड़ा बदलाव था। इससे हुआ ये कि उन पेजों का भी अच्छा विवरण मिल गया जिनके खुद के टेक्स्ट में शायद ज्यादा जानकारी ना हो, और ऐसी चीजें खोजना मुमकिन हुआ जिन्हें टेक्स्ट के आधार पर इंडेक्स करना मुश्किल था, जैसे कि तस्वीरें या कोई प्रोग्राम या डेटाबेस। उन्होंने बताया भी पेपर में कि 1998 तक वो करीब 26 करोड़ एंकर टेक्स्ट एंट्रीज इंडेक्स कर चुके थे। वाह, तो इससे तो सर्च रिजल्ट्स की क्वालिटी बहुत बढ़ गई होगी। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर ये सब करने के लिए, मतलब इतने सारे पेज क्रॉल करना, इंडेक्स करना, रैंक करना, इसके लिए तो तकनीकी ढांचा भी मजबूत चाहिए था। हाँ बिल्कुल, और पेपर में इसका भी जिक्र है। उन्होंने सिस्टम के तकनीकी डिजाइन के बारे में काफी विस्तार से बताया है। जैसे बड़े डेटा को संभालने के लिए उन्होंने बिग फाइल्स नाम की चीज इस्तेमाल की, फिर डेटा को कॉम्पैक्ट रखने के लिए हिट लिस्ट एनकोडिंग, वेब को तेजी से क्रॉल करने के लिए बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड क्रॉलर्स और एक URL सर्वर, और फिर पूरी इंडेक्सिंग की प्रक्रिया जिसमें इंडेक्सर, सॉर्टर और डेटा रखने के लिए बैरल्स का इस्तेमाल होता था। पूरा सिस्टम इस तरह से बनाया गया था कि डिस्क से डेटा पढ़ने में जो टाइम लगता है, जो उस वक्त एक बड़ी रुकावट थी, वो कम से कम हो। काफी जटिल इंजीनियरिंग थी इसके पीछे।
पर क्या उनका मकसद सिर्फ एक बेहतर सर्च इंजन बनाना था या कुछ और भी था? ये एक दिलचस्प बात है। पेपर में उन्होंने साफ लिखा है कि उनका एक बड़ा लक्ष्य अकादमिक समुदाय के लिए एक रिसर्च टूल बनाना भी था। वो चाहते थे कि दूसरे रिसर्चर भी वेब के इस विशाल डेटा का इस्तेमाल करके अपनी रिसर्च कर सकें। तो ये सिर्फ एक कमर्शियल प्रोडक्ट बनाने की बात नहीं थी। वो सर्च इंजन तकनीक को, जो उस वक्त तक बड़ी कंपनियों का एक तरह का काला जादू मानी जाती थी, उसे अकादमिक दायरे में लाना चाहते थे, ज़्यादा खुला बनाना चाहते थे। तो मतलब इस एक पेपर ने ना सिर्फ गूगल की टेक्नोलॉजी की नींव रखी, बल्कि सर्च टेक्नोलॉजी को एकेडमिक रिसर्च के लिए भी खोल दिया। और नतीजे 1998 की शुरुआत तक ही गूगल करीब 2.4 करोड़ पेज इंडेक्स कर चुका था। और salon.com जैसे पब्लिकेशंस कह रहे थे कि इसके रिजल्ट्स हॉटबॉट या excite.com जैसे बड़े सर्च इंजनों से कहीं बेहतर थे, भले ही होम पेज पर बीटा लिखा था। हाँ, और यही हम वापस उस बात पर आते हैं कि ये पेपर कैसे बुद्धिमत्ता और एक तरह की मानवीय समझ को दिखाता है। देखिए, पेज रैंक खुद में एक किस्म की सामूहिक मानवीय समझ को पकड़ता है। ये मानता है कि वेब बनाने वाले लोग जब लिंक करते हैं तो वो एक तरह का महत्व बता रहे हैं। जैसे अकादमिक दुनिया साइटेशंस पर भरोसा करती है, ये सिर्फ मशीनी गणना नहीं थी, इसमें एक मानवीय, एक सामाजिक पहलू जुड़ा हुआ था। ये समझना जरूरी है कि असली बुद्धिमत्ता और मानवीय समझ को आप सिर्फ कोड नहीं कर सकते, उन्हें सिस्टम के मूल डिजाइन में ही बुनना पड़ता है। ये अकादमिक शोध की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है, कैसे एक नया मौलिक विचार जिसे पूरी मेहनत और खुलेपन से दुनिया के सामने रखा जाए, वो दुनिया बदल सकता है। हम सच में सबसे कहेंगे, खासकर नए शोधकर्ताओं से, कि इस मूल पत्र को पढ़ने के लिए जरूर समय निकालें। इसका लिंक हमने शो नोट्स में दिया है। जी हाँ, इसे पढ़ना चाहिए। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अकादमिक शोध की प्रकृति है ज्ञान को साझा करना, उसे खुला रखना। दूसरी तरफ है बिजनेस की दुनिया, जहां कंपटीशन है, विचारों को गुप्त रखने का दबाव है। तो इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, खासकर तब जब कोई अकादमिक विचार इतना प्रभावशाली साबित हो, जैसे गूगल के मामले में हुआ। इस पर सोचिएगा जरूर।